Question 1. The irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even of an individual cell is called differentiation, growth, development, de-differentiation. The correct answer is option B, growth. Question 2. Which of the following is a characteristic of plant growth? Limited growth, unlimited growth, growth stops after maturity, isometric growth. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी। प्लांट्स की अगर हम बात करें, दे हैव कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। Question 3. The region in plants where cells are in continuous state of division is called permanent tissue, meristem, vascular tissue, ground tissue. The correct answer is option B. Meristems और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर continuous division होती है cells की। Question 4. Meristem located at the tip of roots and shoots is a lateral meristem, intercalary meristem, apical meristem और fascicular meristem। तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन सी, एपिकल मेरिस्टेम। Question 5. Growth of a plant is measured by a device called potometer, axanometer, photometer, manometer. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, axanometer, जो कि एक डिवाइस है, ये प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। Question 6. Phase of growth, which is the first phase and represents cell division, is elongation phase, meristematic phase, maturation phase, differentiation phase. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसके ऑप्शन बी, मेरिस्टेमेटिक फेज फर्स्ट फेज है और इसके अंदर सेल डिवीजन मैक्सिमम होती है। Question 7. The phase of growth where cell increase in size by cell enlargement is meristematic phase, elongation phase, maturation phase, de-differentiation phase. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एलंगेशन फेज में सेल जो है वो इंक्रीज होते हैं साइज में बाय सेल enlargement. Question 8. Geometric growth is represented by an equation. तो जियोमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन सी से। यहाँ जो W1 है ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल साइज को, जबकि W0 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल साइज को, R रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ रेट को और T रिप्रेजेंट करता है टाइम को। Question 9. Sigmoid growth curve is a characteristic of a single cell, plant, organ, tissue or individual, only microorganisms, only animal. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्लांट आर्गन हो, टिश्यू या फिर इंडिविजुअल हो, ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 10. The term development in plants refers to only an increase in size, the sum of the growth and differentiation, only the formation of flowers, only the cell division. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो सम है उसको नाम देते हैं डेवलपमेंट का। Question 11. Process by which meristematic cells lose the capacity to divide and matures to form specific function is de-differentiation, differentiation, redifferentiation, development. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Question 12. Ability of a plant cell to give rise to a whole plant is called differentiation, totipotency, differentiation or plasticity. The correct answer is option B. Totipotency means plant cell has full potential to develop into a whole plant. Question 13. Phenomenon where plant follow different pathways in response to the environment leading to the different structures is called totipotency, plasticity, differentiation, development. Correct answer is option B. Plasticity is the process जहाँ plant different pathways use करते हैं in response of environmental change, and it leads to the development of different structures. Question 14. The plant hormones are also known as enzymes, phytohormones, inhibitors, receptors. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, फाइटो हार्मोन्स।
Question 15. Which of the following is a plant growth promoter? Abscisic acid, auxin, ethylene, both B and C. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी। ऑक्सिन जो है ये एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। क्वेश्चन 16 प्लांट हार्मोन दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इज जिब्रेलिन ऑक्सिन साइटोकाइनिन इथाइलिन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑक्सिन वाज द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड लेटर आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। Question 17. Auxin widely used as a herbicide is indole acetic acid, 2,4-dichlorophenoliacetic acid or naphthalene acetic acid IPA. Correct answer is option B. 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसको 2,4-D का नाम देते हैं, इसको वाइडली यूज करते हैं एज ए हर्बिसाइड। Question 18. The Avena curvature test is associated with the discovery of gibberellin, auxin, cytokinin, abscisic acid. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, auxin. Question 19. Apical dominance in plants is due to cytokinin produced in root tips, auxin produced in apical meristem, gibberellin produced in the leaves, abscisic acid produced in the seeds. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन्स की वजह से होती है जो कि प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम में प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 20 विच हार्मोन कैन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन इथाइलिन। करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी। साइटोकाइनिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। Question 21. Plant hormone responsible for the triple response in Arabidopsis seedlings is auxin, gibberellin, ethylene, cytokinin. Correct answer है इसका option C. Ethylene cause triple response in seedlings. Inhibition of stem elongation, promotion of lateral swelling, as well as horizontal growth. ये तीन रिस्पॉन्स हैं जो इथाइलिन प्रोड्यूस करता है अरेबिडोप्सिस सीडलिंग्स में। Question 22. The hormone that promote fruit ripening is abscisic acid, ethylene, auxin, cytokinin. Correct answer है इसका ऑप्शन बी। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। Question 23. Hormone that promotes bolting, sudden elongation of internodes in the rosette plant is auxin, gibberellin, cytokinin, IBA. Correct answer है इसका ऑप्शन बी, gibberellin. Question 24. Which hormone is known as a stress hormone in plants? Auxin, gibberellin, abscisic acid, cytokinin. The correct answer है इसका option C. Abscisic acid is a stress hormone in plants. Question 25. Hormone that promotes seed dormancy is gibberellin, abscisic acid, cytokinin, ethylene. Correct answer is option B. Abscisic acid promotes seed dormancy. Question 26. Hormone that breaks seed dormancy and promotes seed germination is abscisic acid, gibberellin, ethylene, cytokinin. Correct answer है इसका option B, gibberellin. Question 27. Cytokinin are synthesized in apical meristem, root tips, mature leaves are and ripening of fruits. The correct answer is option B. Cytokinins are synthesized in the root tips and are transported through the xylem to the other parts of plants. Question 28. Hormone that delays senescence aging in plants is abscisic acid, ethylene, cytokinin, auxin. Correct answer है इसका option C. Cytokinin delays senescence process in plants. Question 29. Phenomenon of a leaf getting detached from the stem due to the formation of an abscission layer is promoted by auxin, ethylene, cytokinin, gibberellin. The correct answer है इसका option B, ethylene. Question 30. Vernalization is the process of promoting flowering by a cold treatment, promoting flowering by a light treatment, promoting inhibiting flowering by a cold treatment or breaking seed dormancy by heat. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन ए।
Vernalization is the process of promoting flowering in plants by low temperature or cold treatment. Question 31. Pigment that absorb light for photoperiodism is chlorophyll, phytochrome, cytochrome, cryptochrome. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब लाइट फॉर photoperiodism. Question 32. Chardonnay plants flower when day length is longer than a critical period, day length is shorter than a critical period, or they are kept in continuous light, are they kept in continuous dark. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, शार्डे प्लांट्स फ्लावरिंग उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब डे लेंथ जो है वो शार्टर हो देन अ क्रिटिकल पीरियड. Question 33. Long day plants flower when day length is shorter than a critical period, day length is longer than critical period, they are kept in continuous dark or night length is critical. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, लॉन्ग डे प्लांट्स में अगर डे लेंथ लॉन्गर हो क्रिटिकल पीरियड से तो ही उनके अंदर फ्लावरिंग होती है. Question 34. The critical factor for flowering in plants is actually the length of day, uninterrupted day, dark period, light period only, twilight. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड जो है वो क्रिटिकल फैक्टर है फ्लावरिंग के लिए. Question 35. Day neutral plants flower only in short days, only in long days, irrespective of the day length, only in specific season. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, डे न्यूट्रल प्लांट्स को डे लेंथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो शॉर्ट लेंथ हो या लॉन्गर लेंथ हो, दे फ्लावर इन आइदर कंडीशन. Question 36. Process of de-differentiation involve mature cell becoming meristematic again, meristematic cells becoming mature, one type of mature cell transforming into another, or cell division. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन ए, कि जो मेच्योर सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं अगेन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अदर सेल्स. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. Question 37. Ability of a plant to measure the time of day is called photoperiodism, circadian rhythm, vernalization, phototropism. करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, circadian rhythm. Question 38. P660 form of phytochrome is active form that inhibits flowering in STP, inactive form that absorbs red light, active form that absorbs far red light, form that promotes seed germination. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, P660 एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है. Question 39. The P730 form of phytochrome is, तो P37 फार्म जो है 730 फार्म ये एक्टिव फार्म है और ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है. Question 40. C dormancy can be broken by all of the following except gibberellic acid application, chilling treatment, scarification और application of abscisic acid. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रोक नहीं करता बल्कि ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है. Question 41. The phenomenon where a plant flowers only once in its lifetime is called polycarpic, monocarpic, perennial, biennial plant. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी, मोनोकार्पिक प्लांट जो कि लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा फ्लावर प्रोड्यूस करता है. Question 42. Parthenocarpy can be induced by the application of abscisic acid, auxins, cytokinin and ethylene. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्सिन की एप्लीकेशन से हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवा सकते हैं. Question 43. The site of perception of light or dark duration in plants is root apex, leaf, shoot apex, flower bud. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कि जो लीफ है इसके अंदर फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस जो है वो परसीव होता है, दैट इज़ द साइट फॉर द perception of light and dark duration in plants.
Question 44. Hypothetical hormonal substance that is believed to be responsible for flowering is called auxin, florigin, vernalin, cytokinin. Correct answer is option B, florigin hormone. Question 45. Plant movement in response to the light is called geotropism, phototropism, thigmotropism, hydrotropism. The correct answer is option B, phototropism. Question 46. Plant movement in response to the gravity is called, तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है उसको जियोट्रॉपिज्म का नाम देते हैं. Question 47. Movement of sunflower head tracking the sun is example of heliotropism, thigmotropism, geotropism, chemotropism. The correct answer is option A. Heliotropism is the movement of sunflower towards the sunlight. So correct answer is option A. Question 48. The growth movement of a plant part in response to the touch stimulus is called. तो टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो वो कहलाती है थिग्मोट्रॉपिज्म. Question 49. The Gnostic movement, which is independent of the direction of the stimulus, is shown by roots growing downward, folding of leaves in Mimosa pudica, shoots growing towards the light, or roots growing towards the water. Correct answer जो है वो है इसका ऑप्शन बी, folding of the leaves in touch me not plant Mimosa pudica is example of Gnostic movement. Question 50. The role of ethylene in horizontal growth of seedling is to cause increased cell division on the lower side, differential cell elongation on the upper and lower side, increased photosynthesis or inhibition of root growth. तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन बी कि इथाइलिन हार्मोन जो है प्लांट का it cause differential cell elongation on the upper as well as on the lower sides.